plus right, we have to find the domain of this function. Is this clear, students? Now, how to find out the domain? Can anybody tell me the 3 rules for finding the domain? What was the first rule? Denominator should not be 0. Now, when you see the first rule, here it is the denominator, this should not be 0. This is the first rule. Second rule is function inside the square root should be greater than or equal to 0. But here is nothing of square root. And third is the function of log should be greater than 0. So now we have this should be greater than 0. We should solve these two inequalities and then we'll get the domain. Now when you solve this, 2 minus x into 2 plus x, जो आपने आइडेंटिटी लगा दी तो यहाँ से दो वैल्यूज आ गई बेटा, x should not be equal to -2 and 2. Is it clear? Is it clear or not? Yes. Now comes to this inequality. How to solve this? Now this is x square minus 1. So we have x minus 1, x plus 1 greater than 0. Now how many points we have got from here? 0, minus 1 and 1. So now what is the way? Draw the number 9, students. When you draw the number 9, is this clear? These are the interval -1, 0 and 1. Now what you have to do? You have now 4 intervals. Which are the 4 intervals? -infinity to -1, -1 to 0, 0 to 1 and 1 to infinity. You have to check in which interval this function is greater than 0. What is the method to do it? Take a point in all these intervals and try out. Let's say I take first the point in this interval. Let's say I take -2. If I put -2 here, -2 raised to power 3, -2, this is x cube minus x is greater than 0. When I take x as -2, so this becomes -2 whole cube minus -2. Now it's become -8 plus 2. So this does not satisfy, students. -6 is not greater than 0. So this result does not hold true. Means in this interval, it will be downward. Means it is negative. Now comes to the next interval. Next interval is -1 to 0. Take a point on that interval -1 to 0. We can take -half. When you take x as -half, tell me whether the function is positive or negative. Put here -1/2. So this becomes -1/8 plus 1/2. Now student, 1/8, this will become 4/8. So 3/8. 3/8 is positive. So this is positive. So now this interval will be positive. Now comes to the third interval. Third interval is 0 to 1. Take x as 1/2 in this. When you take x as 1/2, 1/2 whole cube minus 1/2. 1/8 minus 1/2. This is negative, students. This will be negative. So this is downward. And the fourth interval, put x as 2. So when you put 2, 8 minus 2 is greater than 6. Means, any doubt till this point, bacho? Please tell me any doubt. Have you understood how to check in which interval the function will be positive or negative? उस इंटरवल में बच्चों एक पॉइंट लीजिए और उसको फंक्शन में डालते रहिए, तो उससे आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. एज यू गॉट द पॉजिटिव, तो ये ग्राफ जो ड्रॉ करना है ऊपर की तरफ कीजिए, जब नीचे आ जाएगा तो नेगेटिव नीचे की तरफ कीजिए. दिस मेथड इज नोन एज वेवी कर्व मेथड. मैंने आपको जब लीनियर इनइक्वालिटीज कराई थी तो आई विल एक्सप्लेन दिस. सो दिस इज नोन एट वेवी कर्व मेथड. नाउ वी हैव
two interval which is positive. This is positive, this is positive. So the interval which we can take is -1 to 0 and 1 to infinity. Now how to work out? Now this interval, let's say -1, 0, 1. So this interval is positive and this interval is also positive, right? So these two intervals are positive. So the interval will be -1 to 0. Now student, tell me, it will be included or excluded? The extreme points will be excluded or included? Since there is no equal sign in the inequality, x cube minus x should be greater. It is not greater than equal to. So we'll take open interval, right? This interval as well as this interval, 1 to infinity. Now another thing is, my x is not equal to -2 and +2. In this interval, -2 or +2 false? No. But in this interval, 2 is also there. So how we'll take this? So there will be hole on 2. How we'll write the domain of the function f? -1 to 0 union 1 to 2 union 2 to infinity. Now what is the purpose of writing this? When you are writing, 2 is not included. Now look at your choices. Now tell me which choice will be there. Now tell me which is the correct choice. Student, I am talking to you. Beta, I have solved the question. You just have to match the choices. Why so much disturbance? Okay. Right, sir. Thank you. So, students, we have got this choice. If you match, this is the C choice. The interval will be -infinity to -1 to 0, 1 to 2, and union 2 to infinity. Now, when you are writing this, that means 2 is excluded in this interval. And as we have find out, f should not be equal to -2 and 2. So hence the domain of the function will be choice C. Student, any doubt to anybody, please ask the questions. Have you understood this or not? Have you understood? If yes, please raise your hand. If no, please ask the questions. Oh, everybody has understood. Very good. Now we come to the question number 6. Now the question is, let f of x plus 1 by x is equal to x square plus 1 by x square. Right? We have to find fx. How to find out, student, fx? F of x plus 1 by x is given. Student, just understand how to do this. If I add 2 in this function and subtract 2, does it make any difference? Does it make any difference or not? बच्चों हमने 2 ऐड कर दिया और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया. Now if you see this part, this is the identity of x plus 1 by x whole square. Yes or no? Is this clear? बच्चों, is this clear or not? Yes. Now can you see something? Now can you tell me what will be fx? Yes. Can anybody tell me what will be fx now? Yes, anyone? Just observe this function. When f is x plus 1 by x, this equal to x plus 1 by x whole square minus 2. Now what will be fx? Can I write x square minus 2? Yes or no?
I have replaced this function with x on both sides. Is this clear? Is it clear or not? Yes, sir. Have you understood how to work out? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें बच्चों. क्वेश्चन नंबर 7. If function f from R to R means real numbers to real numbers satisfied, f of x plus y is equal to fx plus fy for all xy belonging to R, and f1 is equal to 7. Find R equal to 1 to n f of R. We have to find this. Student, first of all, tell me how many of you have understood the question. How many of you have understood, please? Yeah, please come and explain, बच्चे. जिस भी बच्चे को समझ आया ना हैंड रेज के गर्ल ने, प्लीज कम एंड एक्सप्लेन मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन. प्लीज कम बच्चे, प्लीज. नो प्रॉब्लम बेटा, अगर आप गलत भी बताओगे देयर इज नो इश्यू. प्लीज कम एंड टेल मी व्हाट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द क्वेश्चन. And for your kind information, I would like to tell you that this question was there in JEE exam few years back. Right, around 19 or 20 के अंदर ये क्वेश्चन आया है JEE के अंदर. So the point is you should understand the question carefully. Now there is a relation between x and y. Function of x plus y is equal to function of x into function of y, and we have to find out summation r varies from 1 to n f r. So now students, we start from here. What is the meaning of this? Can anybody tell me? Can anybody tell me? f r, right? Yes. Can student I write this as can I write it like this or not? Yes or no, students? Yes, tell me. Can I write it like this or not? Yes, sir. So now we have to find f1, f2, f3 और उनको ऐड करके आंसर फाइंड आउट करना है जी. See how to find out f1, f2, f3. f1 is given 7. Now I have to find f2. According to the relation given, f of x plus y is equal to fx plus into fy. यही है ना, प्लस है इंटू है, प्लस है बच्चे. This is fx plus fy, right? So now what we have to do, take x equal to 1 and y equal to 1. So what this becomes? 1 plus 1, and this will be equal to f1 plus f1. Any doubt बच्चों यहाँ तक? सर स्क्रीन ब्लर है. हाँ जी, स्क्रीन ब्लर है सर. स्क्रीन ब्लर आ रहा है. Okay, let me check. You can do one thing, sir. You can rejoin, or let me. There must be some network issue then. If screen is blur, right, students? So this was the question. Function f from R to R, where f is defined as f of x plus y is equal to fx plus fy for all xy belonging to R, right? Now what is given? f1 is given to 7, and we have to find summation r varies from 1 to n fr, right? So now I explained you, first of all, you should know the meaning of this statement. So what is the meaning of summation? You change the value of r from 1, 2, 3, 4 up to n and add them. So I have written the meaning of summation r varies from 1 to n in the bottom line. Is this clear? यहाँ तक कोई डाउट बच्चों? यहाँ तक कोई डाउट? So now we have
f1 is given to us, we'll find f2, f3 and so on. So now f1 is 7 according to the function f of x plus y equal to fx plus fy. So I have taken x and y both as 1. So when I put in this equation 1, 1, so what we got? f2, 1 plus 1, 2 equal to f1 plus f1 means 7 plus 7, that is this clear, bacho? Is it clear or not? Yes, sir. So now when you put x as 2 and y as 1, आप interchange भी कर सकते हो बेटा, 2 or 1, 1 or 2, right? So what this becomes? 2 plus 1, f3. f3 will be equal to f2 plus f1. So now we have both the values, f2 as 14 and f1 as 7. So we got the value of f3 also. Similarly, put x and y both as 2. So we got f2 plus f2. So f4 is equal to 14 plus 14, 28. So now we have got the value of f1, f2, f3 and f4. See how what we have to do now. Summation r varies from 1 to n. So fr will be equal to f1 plus f2 plus f3 plus f4 plus up to fn. What is the value of f1? 7 plus 14 plus 21 plus 28 plus up to n terms. Any doubt till now, bacho? Any doubt? So now can we take 7 common? 1 plus 2 plus 3 plus up to n आ जाएगा बच्चों. Now what is the sum of n natural numbers? बेटा ये AP फॉर्म हो रहा है. Now can you find out the sum of this? What is the formula for sum of n terms of AP? n by 2, 2a plus n minus 1 into d. d is also 1. इसको जब simplify करेंगे so this comes out to be n into n plus 1 by 2. This will be your answer. Have you understood this question, बच्चों? कितने लोगों को समझ आया? Please raise your hand. सबको समझ आ गया? Very good. Any doubt बच्चे? चलिए तो हमारी ऑप्शन कौन सी हो जाएगी इसकी? अगेन सी ऑप्शन. सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 8. fx is equal to log of 1 plus x over 1 minus x, where x lies between -1 to 1. डोमेन गिवन है बच्चे यहाँ पे फंक्शन की. Then we have to find right student, fx is given. We have to find the value of f of 3x plus x square upon 1 plus 3x square, right? Minus f of 2x upon 1 plus x square. This value we have to find out. How to do this? Student, how to do this? When you have to find this term, replace in a place of x, we have to replace this term. जब इसको सॉल्व करना है बच्चे, x के प्लेस पे हमने ये टर्म डाल दी. So do the same thing on the right side. Replace x by this entire term.
बच्चों, any doubt till now? Any doubt? बेटा हमने x को रिप्लेस किया दिस टर्म के साथ ऑन द बोथ साइड, राइट? आप जब पॉलिनोमियल करते थे जूनियर क्लासेस में, सपोज एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस टू, आपको निकालना है एफ टू, तो व्हाट यू यूज टू डू, एक्स को रिप्लेस किया टू से ऑन लेफ्ट साइड, आल्सो टू से रिप्लेस किया ऑन द राइट साइड. तो सेम थिंग आई हैव डन हियर. व्हेन आई हैव टू फाइंड दिस टर्म, I have replaced x by this term on both the sides, and now we can solve this. Now we can solve this. जब इसको सॉल्व किया तो बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, f of dx plus x square, that will be equal to log of 1 plus this term, means 1 plus 3x square plus 3x plus x square, right जी, upon 1 plus 3x square minus 3x minus, बेटा डिनोमिनेटर था जो कैंसिल हो जाएंगे दोनों डिनोमिनेटर्स. एनी डाउट टिल नाउ? एनी डाउट टिल नाउ? अच्छा यहाँ पे ना मुझे क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है. आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे, ये एक्स क्यूब होना चाहिए. दिस शुड बी एक्स क्यूब, राइट? चेक कर लेते हैं एक बार. दिस शुड बी एक्स क्यूब, राइट? एंड इफ इट इज एक्स क्यूब, राइट? सो नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस, सो व्हाट इट बिकम्स, लॉग ऑफ, अगर आप ऊपर ध्यान से देखो बच्चे, ये आइडेंटिटी बन रही है 1 प्लस एक्स होल क्यूब की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. सो दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ 1 plus x whole cube, and this is the identity of 1 minus x whole cube. Any doubt बच्चों यहाँ तक? Any doubt students? Any doubt? So now what we got, log of 1 plus x over 1 minus x whole cube. Any doubt in this बच्चों? Any doubt? Now we have a property of log बच्चे. What is that property? If we have log m raised to power n, that can be written as n log m, right? So this can be written as n log m. So we'll apply this property here, and this term, that is f of 3x plus x cube over 1 plus 3x square will become equal to 3 of log 1 plus x over 1 minus x. Is this clear बच्चों? Is it clear? Is this clear or not जी? So I have applied the log property. Any doubt? Whole class is in the silent mode. बेटा I think अगर नहीं clear है तो you should ask the questions. ठीक है? I can understand आप लोगों के लिए नया concept है ये. ठीक है? How to work out with the function, right? But this is very important topic. We have to do some question brainstorming type questions, right? So lot of concepts are new for you, so you may find problem to understand, but please keep on noting down so that later on when you go through it you can understand these questions, right? So see and tell me any doubt बच्चों, any doubt? Yes, चलो अब सेकंड पार्ट करते हैं अगर कोई डाउट नहीं है बच्चों. Now second thing we have to find out f of 2x over 1 plus x square. So again replace x by this function on both sides. One minus
So what this becomes, students? Log of LCM ले लिया बच्चों आपने, 1 plus x square. Similarly, LCM will be 1 plus x square, 1 plus x square minus 2x. Now these denominators will be cancelled out. This is the identity of 1 plus x whole square. This is 1 minus x whole square. So we can write 1 plus x. Any doubt? Any doubt, bachcho? Again, applying the log property, log m raised to power n. So this will become log 1 plus x over 1 minus x. And this part is fx. So we can write 2 times fx. Similarly, in previous way, here we can write 3 times fx. हाँ जी बोलिए बोलिए बेटा, क्या क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? तो बच्चे हमें क्या आंसर आ गया हमारे पास? मीन्स 3x minus 3 of fx. 3fx minus 2fx. So the answer will be fx. So choice is D choice. D will be the right choice, bachcho. Clear? Is this clear? Any doubt, bachcho? Please tell me. So we move on to the next question. Now the question number 9. Let f is equal to be a function from R to R. So we have to find range. Now student, what is the meaning of this question? Means this is x, this is y, right? So we can write fx is equal to x square upon 1 plus x square, right? And x belongs to real number and range is also real. So we have to find the range of this question. How to find out the range? First of all, you have to find domain, but domain is here given. X belongs to real numbers. So domain is all real number. Now what is the way to find out domain? Let fx is equal to y. So what we have? X, y is equal to x square over 1 plus x. Now make it in a function of y. So cross multiplying. Take x square on that side. Y is equal to x square into 1 minus y. And x square is equal to y over. And x will be equal to. Yes, student, any doubt in this? Any doubt? Yes, बच्चों. So now बस जैसे आप डोमेन के लिए करते हैं जी, y over 1 minus y should be greater than equal to 0 and 1 minus y is not equal to 0. Now you need to solve this inequality. इस inequality को solve करना है और आपके range of the function आ जाएगी जी. So now range of the function कैसे find out करनी है? अब देखिए जी, यहाँ से क्या आ रहा है बेटा? y is not equal to 1. एक तो रिजल्ट ये आ गया हमारे पास. दूसरा इस inequality को solve करना है जी. How to solve this inequality? Can anybody tell me how to solve this inequality? Yes, बताएंगे जी. देखिए बच्चों, जब ये इसको दिस फंक्शन शुड बी पॉजिटिव, तो दो केस हो सकते हैं. व्हाट इज द केस वन? बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव. अगर दोनों पॉजिटिव हैं बच्चों, हाँ जी बता रहे हो बेटा? अच्छा, मुझे लगा शायद बता रहे हैं जी. तो व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन? y should be greater than 0
and 1 minus y should be greater than equal to 0. From here what we got? तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? y should be greater than, means y is less than 1. तो ये रिजल्ट आ गया जी, 0 से ग्रेटर देन और इक्वल और 1 से लेसर. दूसरे केस में क्या आ जाएगा? केस 2, y is less than equal to 0, both are negative, and 1 minus y is less than equal to 0. From here what we got? Is this clear? y is greater than 1 and y is less than equal to 0. क्या ये पॉसिबल हो सकता है रिजल्ट? 0 से लेस होना चाहिए और 1 से ग्रेटर. तो ये वाला रिजल्ट तो पॉसिबल नहीं है बच्चों, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो अब पहले वाले रिजल्ट पे आ जाएं जी. y is greater than 0 means greater than equal to 0, तो y will lie, this is 0, this is 1, right? But less than equal to 1. But here the exception is there, y is not equal to 1. तो 1 पे बच्चे होल आएगा और आपकी जो रेंज हो जाएगी that will be 0 to 1. 0 included but 1 is not included. Sorry, 1 is not included, right? So result will be, range of the function will be 0 to 1 where 0 is included but not 1. Is this clear? Any doubt बच्चों? अगर आप देखिए, अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएं क्वेश्चन में बेटा, अगर आपके पास ये फंक्शन है, इफ x इज 0, तो न्यूमरेटर 0 हो गया, डिनोमिनेटर 1, तो आंसर इज 0. बट in any case whatever the value of x you put, can it be equal to 1? Denominator will be always greater by 1. बेटा डिनोमिनेटर अगर देख रहे हो आप, तो it is x square plus 1. Whatever will be the value of numerator, we have to add 1 in the denominator. So means denominator is always greater than numerator. So therefore it cannot be 1. It will always lies between 0 and 1. Is this clear? So we move on to the next question बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन. fx is equal to x square minus, right, and where x belongs to all real numbers minus 0, right? Find f of 1 by x. We have to find f 1 by x, find out करना है बच्चों हमें. See how to do this. fx is equal to x square minus, is this clear बच्चों? Now you have to find f of 1 by x. Replace x by 1 by x. So what this becomes? 1 by x whole square minus 1 over 1 by x whole square. So what this becomes? 1 by x square. ये बच्चे क्या हो जाएगा? 1 over 1 by x square, which will be equal to 1 by x square minus x square. Can we write it equal to, minus कॉमन ले लिया, x square minus 1 by x square. तो ये हमारा सेम फंक्शन है जहां से हमने स्टार्ट किया था. तो f of 1 by x will be equal to minus fx. हुआ बच्चों क्लियर? बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, x को रिप्लेस करना था 1 by x से, राइट? सो व्हाट यू गॉट? माइनस fx. अंडरस्टूड और नॉट? कोई डाउट बच्चों? एवरीथिंग इज क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 11, अगेन द क्वेश्चन ऑफ डोमेन. 5 minus 4x minus x square under root plus x square
बेटा ये क्वेश्चन करोगे ट्राई आप? बिल्कुल अगेन डोमेन के 3 में से 2 रूल लग जाएंगे यहाँ पे, स्क्वायर रूट वाला रूल और लॉग वाला रूल. विल यू ट्राई दिस? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू ट्राई? प्लीज रेज योर हैंड. कोई भी ट्राई नहीं करेगा बेटा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अभी कर चुके हैं. आज का फर्स्ट क्वेश्चन यही था. देखिए जरा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वंस अगेन. स्क्वायर रूट का फंक्शन जो है दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0. तो यहाँ से तो एक रिजल्ट आ गया, x शुड बी ग्रेटर देन -4. तो दिस इज अ वन रिजल्ट. अनदर इज सॉल्व दिस, राइट. हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले ले बच्चों यहाँ पे. माइनस से डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, राइट. इज दिस क्लियर? तो फैक्टर बना देते हैं बच्चों यहाँ पे. एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स, सो x प्लस 5 एंड x माइनस 1. ये आ गए आपके फैक्टर जी. एनी डाउट टिल नाउ? एनी डाउट बच्चों? अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए अगेन वील ड्रॉ द नंबर लाइन. यहाँ से 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, 1 एंड -5. दिस इज -5, दिस इज 1, राइट. तो वी हैव टू चेक द इंटरवल्स. कहाँ पे ये पॉजिटिव है? वी रिक्वायर दिस फंक्शन लेस देन इक्वल टू 0. मीन्स नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है? इसके बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं. लेट्स से वी टेक 0. जब हमने 0 लिया तो 0 प्लस 5 पॉजिटिव, नेगेटिव, सो दैट विल बी नेगेटिव. दिस फंक्शन विल बी नेगेटिव मीन्स, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा फंक्शन का, राइट. -1 से ग्रेटर लेके देखिए जरा. 2 अगर आप ले रहे हैं, 2 प्लस 5 7, 7 इंटू, तो दैट विल बी ग्रेटर. तो हमारा फंक्शन कौन सा रिजल्ट आ रहा है बेटा? ये वाला ही. सो दिस इज द फंक्शन. बट यहाँ पे एक -4 भी है. तो व्हाट इट सेज, इट शुड बी ग्रेटर देन -4. तो -4 इज दिस. सो व्हाट विल बी द डोमेन देन? -4 से ग्रेटर होना चाहिए एंड इट कैन बी टिल 1. सो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. गिवन है ये वाला पार्ट. सी चॉइस विल बी द राइट आंसर. एनी डाउट बच्चों? कुछ नहीं समझ आ रहा? प्लीज आस्क क्वेश्चंस. हाँ जी. इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करनी है, यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग, हाउ टू अप्लाई द वेवी कर्व मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों. रेंज ऑफ द फंक्शन 12th. एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, राइट बच्चों. इज दिस क्लियर? कैन एनीबडी टेल मी हाउ टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? यस, कौन बताएगा जी? कोई बताएगा बेटा रेंज कैसे फाइंड आउट करनी इस फंक्शन की? हाँ जी. देखिए बेटा ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसकी रेंज कैसे निकालनी है. अगर आप यहाँ देखो तो दोनों क्वाइट सिमिलर सी टर्म्स है बेटा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. कैन वी राइट दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4? कैन वी राइट लाइक दिस? यस, यस और नो बच्चों? नाउ कैन वी सेपरेट दिस? एनी डाउट इन नाउ? ये कैंसिल हो जाएंगे बच्चों. बट यू गॉट 1 प्लस 4. एनी डाउट इन नाउ जी? एनी डाउट?
और ये वाला फंक्शन अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले इस तरह का। सी दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये हमेशा वन वन से लेके किसके बीच में लाई करेगा बेटा? ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। 0 हो सकता है ये? देखिए बेटा, ये हमारे पास है 4/x+4। दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव इफ x इज 0। तो दिस इज 4/4 1 मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू बच्चों? 1। बेटा 1 से ऊपर तो नहीं जा सकती ना इसकी वैल्यू, बिकॉज डिनोमिनेटर विल बी ईदर 4 और ग्रेटर देन 4 इन ऑल केसेस। यस और नो? So its maximum value can go 1. What can be its least value? Can it be 0? No. Why? Why it can't be 0? Yes. Beta, x will always be 0 or greater than 0. Means suppose x has very small value, 0.11, something like that. So this will not be 0, means this function, ये वाला जो function है वो greater than 0 होगा, right? This will be greater than 0 but less than equal to 1. Am I right or not जी? Am I right? So now इस फंक्शन की वैल्यू जो आ रही है वो 0 से ग्रेटर है बट 1 के इक्वल और लेसर है। सो what will be the value of this function? 1 प्लस ये आ गया बेटा। अगर इसमें ये ऐड करेंगे सो व्हाट दिस बिकम्स, चलो मैं आपको एक और वे से सिखाता हूँ। अब ये वाला फंक्शन जो था अभी हमारे पास, ये आ गया बेटा। लेट से दिस फंक्शन को मैं gx लिख रहा हूँ। नाउ 1 प्लस gx की वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है बेटा? gx इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। जब इसमें 1 ऐड कर देंगे, इसमें बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया आपने, तो व्हाट इट बिकम्स, ये आ जाएगा बच्चों, राइट और नॉट? So what will be the range of the function? 1 to 2. 1 not included but 2 included. So option B will be the right answer. Understood बच्चों या नहीं? कितने लोगों को मुश्किल लग रहा है ये टॉपिक? How many of you are finding it difficult? Please raise your hands. किसी को डिफिकल्ट नहीं लग रहा? All of you are genius. चलो अच्छी बात है, नहीं लग रहा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। 13th क्वेश्चन। चलो इसकी डोमेन बताइए जरा 13th क्वेश्चन की बेटा। जस्ट हैव ए लुक एट द क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट इज द डोमेन। यस, एनीवन कम एंड टेल मी। मैं किसी को बुला लेता हूँ फिर। बेटा ये फ्रंट बेंच पे बॉयज में ना जो एक्सट्रीम, जो आइजल साइड बैठा है बेटा, वो आ जाए जरा। बिल्कुल सेंटर वाला जो बच्चा है, जो कॉर्नर पे है ना, फर्स्ट बेंच के कॉर्नर पे बेटा, प्लीज कम। नहीं, वॉल के साथ वाला नहीं, जो आइजल में है, बीच में है, सेंटर वाला, दिस साइड। ये जो दूसरों को बोल रहा है ना बेटा, वो खुद की उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जो दूसरों को हाथ उठा उठा के बोल रहा है कि आप जाइए आप जाइए। नहीं नहीं, इसके साथ वाला सर। नहीं नहीं सर, इस तरफ आपके साथ है जो, बिल्कुल। ये वाला? हाँ जी हाँ जी सर। प्लीज कम बेटा। यस टेल मी व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन इन क्वेश्चन नंबर 13।
domain of the function in question number 13. बेटा देख के ही पता चल रही है ना डोमेन तो। राइट बच्चे देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जी। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 2 ओवर 3 माइनस एक्स। तो बड़ा सिंपल सा चीज है। हाँ जी, कौन सी ऑप्शन, डी या बी? सी सर, सी सी ऑप्शन नहीं, सी तो हो ही नहीं सकती, रॉन्ग है बेटा। देखो इसकी डोमेन निकालो पहले। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, तो इसकी डोमेन तो ये आ रही है ना, तो सी तो हो ही नहीं सकता। तो आपके पास या तो ऑप्शन बी आएगी या डी आएगी। समझ में आ रहा है ना बेटा? ऑर्डर देखो ना लिखने का, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन फर्स्ट फंक्शन होगा, अब रेंज निकालनी है इसकी। हाउ टू फाइंड आउट द रेंज? लेट दिस इक्वल टू वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स वाली टर्म एक तरफ कर दी और वाई वाले एक तरफ, तो इसको उधर ले गए जी। 3y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई, एक्स कॉमन आ गया बेटा, 1 प्लस वाई। तो इसकी जो रेंज आनी चाहिए वो y इज नॉट इक्वल टू -1, तो -1 वाला है। और हाँ, बी ऑप्शन आएगा बच्चों। यहाँ से आ रहा है ना, देखो फंक्शन क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 3y प्लस 2 ओवर y प्लस 1, मीन्स इसका डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो मीन्स y इज नॉट इक्वल टू -1। तो इसकी जो रेंज आ रही है वो आ जाएगी r माइनस -1। इज इट क्लियर? एनी डाउट बच्चों? एनी डाउट? तो क्लियर है या नहीं है? इज दिस क्लियर और नॉट? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए जरा, असर्शन रीजन। 1 मिनट लगेगा, मैं करा देता हूँ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड एक्स। 2 टाइम मॉड एक्स क्या हो जाएगा बेटा? ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ मिसिंग है बेटा, सो विल लीव दिस क्वेश्चन। राइट, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री आई थिंक नहीं की है ना अभी आप लोगों ने? हैव यू डन ट्रिग्नोमेट्री? चलो ये दोनों क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, ठीक है? सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट सर फॉर योर सपोर्ट। We'll meet next time, next week. Thank you very much.